Dhruv bhai, thank you for taking the time out and doing this. Sure. Quick intro about him. He's a Bitsian. He's studying MS Biological Sciences and Mechanical Engineering at BITS. And he has a Mm. startup, Fodu Club. उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे बट उससे पहले हाउ हैज योर लाइक यू आर इन द फोर्थ ईयर नाउ So I just got done with my third year ke final exams हाँ like 5 days ago, and now I'm at home. I'll be starting with fourth year in around 2 months. So, like briefly, like how has your experience been at BITS Goa for 3 years? Right. So the first semester was online because of COVID. Hmm. So usme it was not really eventful because it was online. But I came to campus on 4th May 2022, and I spent almost 1, 2, 3, 4, 5 semesters on campus. Life was good. Starting में I lived in a sharing room with one more person, roommate, Hmm. and in my second and third year I lived in a single room. Hmm. Life was pretty good. A lot of things came by, a lot of opportunities, a lot of events, a lot of experiences, and yeah, I embraced them pretty well. I mean, I have had a pretty good college life so far, and I am a little scared that I just have one more year on campus. I don't want it to like end soon. So yeah, pretty much. So it there should be 2 more years, right? You're done with 3 years, so 2 more years, Mm. right? So the thing is, how it works at BITS is for a dual degree, you it's a 5 year course. So for the first 4 years, you complete all your acads, Hmm. all the CDCs, like compulsory Hmm. disciplinary courses for bio and mechanical, and you do your electives and all that. Hmm. In the fifth year, you have to do an internship in the entire Okay. year. Okay. And this internship is off campus. So it generally happens in any like city like Bangalore, Hyderabad, Gurgaon, Mumbai, Delhi. So you are out of the campus throughout the year. Hmm. So that's why. So So on that's campus, I why just have one. on campus it's your final year. Mm, Awesome. mm, Talking about Photo Club, how mm. long have you been like from the day it started? It's been a year. I would say it's been more than a year. The thing is, I don't remember the exact date I started it because it happened in the GIF. I launched a free WhatsApp group for JEE BITSAT aspirants. I think that happened in around Jan 2023. Hmm. But then we formally made Photo Club in April 2023. For the Hmm. first 3 months, it was just a random like BITSAT mentorship group, JEE Hmm. mentorship group. Hmm. It had no name. There was no branding. But in April, we formalized it and like rebranded it as Photo Club. And like you So, are the CEO or like you have co-founders too there. uh, so there are two founders. I'm one of them, and the other one is Kushal, my Hmm. friend. He's also my batchmate. Hmm. He's pursuing electronics and instrumentation, Hmm. and he's also going to start with fourth year now. So both of us started it in April, and both of us are the co-founders. So like it's just you guys hand preparing, making all of the things, or you have like teams and you've delegated stuff now. Definitely. I mean, when we started, it was just two of us. Actually, it was three of us. We had another friend who was helping us. And this year, in total, we have 13 members in the team Wow. right now. So there are 13 people who are working as interns or as professionals, who Hmm. provide services or who work with us as mentors. Hmm. So there are 13 people, like including Kushal and me, there are 13 people. Hmm. And you mentioned like so like a quick intro about what Photo Club does, and it has shown real results too. So like maybe you can briefly explain that. So what happened was that it all started when I was in my 11th standard, Hmm. right? So I used to go to this one coaching near my house for JEE prep. Hmm. And the thing is that I wanted to interact with students who have cracked these exams and who have managed to get into IITs or BITS or NITs. But the thing is that I come from Goa, and in my uh, in my family or in my network, I did not know anyone who has cracked these exams. It was very difficult for me
to find people to talk to and understand how these exams work. And that time there wasn't really a lot of YouTube also back in 2019. So there was not really I did not really find a good resource to actually interact with and find out कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. That's why I felt like when I came to BITS, I when I interacted with my friends or my hostel mates, I realized that a lot of people face the same problem. Not everyone has an elder sibling or a cousin who is an IITian or a Bitsian. So there's always a confusion about what to do, what not to do, because there is so much confusion in JEE space, right? There are so many resources, so much content, so many things, blah blah blah. So it's very difficult to figure out what to do and what not to do. That's why a couple of my friends from my hostel and my batch, as well as some of my juniors, they volunteered to start this free community, free WhatsApp group for JEE and BITSAT aspirants, so that we could give them transparent and like on ground advice and information about what exactly is happening in these colleges. That's the reason why we started, and the pure intention was to give the correct information and to pretty much not let the students be in delusion, give them on ground reality and a reality check about what exactly happens in these exams. Mm. So that's how it started. That was the purpose of it. And in the first year, we had around 800 people who filled our form, Okay. the form that I launched on my YouTube channel. And it Around 800 was people. paid. No, free. Okay. Got it. Completely free. The intention was very easy. Like you join, there are like I live in a hostel. मेरे पूरे wing में there are 7 people. They were like हम लोग भी आएंगे साथ में. सब लोग WhatsApp group में admins थे. So all you had to do was join the group, tag an admin. All the admins were from BitScore and ask any question, and they would get back to you whenever they are free. So it was like giving back to our juniors kind of initiative. But then eventually we decided to launch our product because as the students were communicating in the groups, we realized that there is a problem that students are facing, especially in BITSAT. So because we are from BITS, we thought that it would be right and good if we develop something for the students based on our experience. That's how we ended up making a test series. That's how we ended up making all the things that we've done today. So even today, we have a free group. It's not like we stopped doing that. Um, Last year, there were 800 students. This year, almost 5,000 students have filled our form. Wow. The free community. So that's like 6x more people have filled the form. So that still happens. It's still there. But we also and that's how we formalized the entire company. Got it. So pretty much. So the main purpose was at the starting was कि on ground mentorship नहीं है बच्चों के पास. They have no one to talk to when they aspire for these institutions. Got it. Right. So the problem is that the mentorship word, I think, is it has come into limelight in the last couple of years, if not decades. I mean, I think it came in limelight somewhere around 2020. So people started to search for mentorship, search for all these people who are in all these good colleges. But the thing is that very few people are actually doing the right work. A lot of them just charge you some amount, and they don't really provide that service that they promised. So that's why like we decided to do it from our end. That was like the initial reason why we started. And then like I mean, even today we have WhatsApp. Even today, like we work from WhatsApp. And in the starting, like in the first year, like what products then you like provided? What were the products? Right. So as I mentioned previously, we started in Jan or December 2023, almost like 1 year, 4 or 5 months ago. I launched the free group on my YouTube channel, and around 700-800 people filled the form. In the next 2-3 months, we figured out that what pain points are these students, aspirants actually facing. One of them was a test series for BITSAT, a mock test series. They did not know which one to go for. They were not sure about which one is very relevant for BITSAT and which one is not. So we decided to develop a test series for BITSAT. That was the first thing that we ever did. And we were still analyzing and monitoring the conversations that were happening in the group. So students जो भी बोलते थे, मतलब in general तुम ऐसा समझो कि like हम लोग हमारी टारगेट ऑडियंस के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं.
सो वो लोग जो भी कन्वर्सेशन करते हैं, दैट एसेंशियली मीन्स कि वो उनके पेन पॉइंट्स हैं या फिर वो उनका जो भी है, राइट? When we developed a test series, it received a very good response. And at the same time, alongside, we were also monitoring the chats. Hmm. So based on the chats, we came to know that people require a book for BITSAT. People require chapter-wise tests for BITSAT. Reasoning एक section होता है BITSAT में, Hmm. which is not there in JEE. So BITSAT has 5 subjects: physics, chemistry, maths, English, and logical reasoning. So people wanted to know how to prepare for these 2 exams or these 2 subjects. उसके लिए we had to prepare something. So year 1 में सिर्फ test series था, but we got insights कि year 2 में क्या-क्या develop करना चाहिए हमको. Hmm. So year 2 में we developed all those things. Now based on this year conversation, we know what to do for year 3. Hmm. और so we develop based on जो भी मतलब inputs है, जो भी feedback है. Hmm. So last year we just had test series. This year we have a test series for BITSAT. और BITSAT के लिए book which is sold out, which is not really Okay. available in the market. Okay. उसके 1500 units बनाए थे हमने, they got sold out. Wow. And we have chapter wise tests. We have a course for English and logical reasoning. अच्छा. Last year हमारा एक student, he got 78 out of 90 in English and logical reasoning section. So he volunteered to make a course. बाकी almost all of our products are pretty much developed by the students who cracked BITSAT through Photo Club Hmm. last year. Okay. So हमारी टीम में भी जो लोग हैं, like 70% of them are people who were in Photo Club last year and they are in BITS or IITs right now. Hmm. So pretty much इस साल भी वही होगा. All the students who crack these exams through Photo Club, pretty much they'll be joining us again. Hmm. And that's how we grow. So like you developed a course मतलब logical reasoning और English के लिए एक proper course है. It has video lectures and test series and all. Yeah, And it it is does. It does. developed by the students who've cracked it और आप भी उसमें पढ़ा रहे हो the co-founders? No. No. So basically, the thing is that the student who is making that course, he personally did not join BITS, Hmm. but he was very good at English and logical reasoning. Yeah. So he made the entire structure for the course. He made the entire curriculum, Hmm. and he came and told me, "Ki this is the structure. I think this is how it works." So I personally like to collaborate with students because I think that firstly he was a photo club student. It makes sense for me to provide him an opportunity. He's a first year student now. I would want to be his first internship uh, opportunity giver. Secondly, he was very curious about it and he genuinely wanted to help students, right? So I liked the intention and I wanted to give an opportunity. So we ended up working together. God. We actually floated like BitSat started 2 days ago, and we floated a form. How much percent of the course have you completed, and how much of it was relevant to BitSat? So the people who completed over 70 to 80% of the course said that it was almost 85 to 90% relevant to the final English LR thing that they encountered in the paper. Hmm. So the people who actually did it religiously have benefited from it. And that means that what he designed was good. And we can believe that, the course structure is relevant for BitSat. Hmm. और मैंने अभी वेबसाइट भी देखी फोर्ड क्लब की तो लाइक इट नाउ यू गाइस हैव डाइवर्सिफाइड टू अदर नॉन जेई एग्जाम्स टू. Sure, yeah. Yeah, so like witty, comet k. So like usually the competitive industry is more consolidated towards J preparation, but you guys have taken the opposite approach. So tell more about के क्या मिस करते हैं जो केवल जेई को फोकस करते हैं and why to look at these other exams too. I mean, what type of answer do you want? Do you want like a startup oriented answer or do you want a student oriented answer? Both. I mean, you can answer in both ways. See, from a student point of view, let's understand it. If you are a student and if you are studying for JEE, there are 95% or 90% chances that you're not going to get into a good college through JEE. And when I say a good college, I mean an old IIT or old NIT. So considering an old IIT or NIT, there are hardly 10 to 15 colleges. So अगर तुम top 5,000, top 10,000 rank में नहीं हो, then you're not going to get into a good college. 90% लोगों को नहीं होने वाला.
So this makes it very important for you to have some other target options in your mind, some other options that are maybe not as good as these JE colleges, but they have a better output, input versus output ratio. And that's why, like from student point of view, these exams become very important. Considering you're a very practical person, ठीक है? You're not in delusion that मेरे like 70% आ रहा है फिर भी मैं JE एडवांस की तैयारी करूंगा. You have to be practical and you have to understand that maybe it's not for you. You should rather focus on other exams that have higher output for the same amount of effort. So that's student point of view. From a startup point of view, I mean, this might be a little technical, and maybe not everyone will be able to understand it. But see, every market has a cap. Okay, so there's a value of a market. Let's say JE market. JE market, there are thousands of companies. These thousands of companies have XYZ valuations, and the sum of all these valuations will tell you the market cap of the JE market. So the thing is that when there are so many competitors in a market, it becomes very difficult for you to create an identity for yourself, right? So considering that बहुत सारे legacy players हैं, there are players like all these big coachings that have been there since decades. Some ed tech companies which have you know loads and loads of funding. They have a presence since the last 4 to 5 years, and they have a lot of influence in the entire industry. It becomes very difficult for you to tackle them when you don't have that amount of leverage. Mm. That's reason number one why it's good to not enter mainstream exams if you are considering to like start up. Mm. Secondly, the thing is, you have to be very you have to be very sure about what is your target audience. Mm. JEE has a specific demographic. जो लोग JEE आंसर करते हैं, it's possible that maybe 50 to 60% of them are not, are coming from backward classes like SC, ST, OBC. Okay. So it's possible that maybe their spending capacity is a little lower as compared to a person coming from Mumbai or Delhi. Mm. So if their spending capacity is lower and if you're providing them with mentorship, it's very difficult because mentorship is a service-based business. So that's why maybe catering to them will not be a good decision. You should rather cater to someone who has high spending capacity. Maybe someone who can afford bits, someone who can afford Manipal. They can pay higher for products. Mm. So you have to consider all these things: spending capacity. What is the size of the market, right? I mean, J 1 million लोग देते हैं, 1.4 million लोग. BITSAT maybe 2-3 lakh लोग देते हैं. Mm. 2-3 lakh is a good enough chunk to target. उसमें से even if you calculate कितने लोग खरीदते होंगे BITSAT के लिए products, it's still good enough. Mm. Considering कि तुम एक स्टूडेंट हो and you're trying to build something. So instead of what generally people think is एक बड़े मार्केट का एक छोटा पार्ट बनता है, what we try to do is एक छोटे मार्केट का बड़ा पार्ट बनता है. Finding your niche. Finding a niche. Yeah. So that's how we started. And again, we had the option to enter JEE, but the problem with JEE is that कि इतना सैचुरेट हो चुका है ना, आज की डेट में तुम अगर खोलो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वन शॉट 100 वीडियो आ जाएंगे तुम्हारे सामने, राइट? एंड उन 100 वीडियो में तुम्हारी पहचान बनाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. You need a lot of resources, you need a lot of capital, you need a lot of credibility for that. And that was not worth the amount of efforts that we have to put in. So it made sense to uh, sideline JEE and actually go to some exam that has more output as compared to JEE. सो एक स्टूडेंट जब किसी भी एग्जाम को भरता है तो लाइक द एंड गोल इज टू एक उस इंस्टीट्यूशन में पहुंचना है. सो लाइक दिस ऑब्वियसली बिट्स इज देयर. बिट्स का टैग सबको पता है. बिट्स इज हाईली वैल्यूएबल. अदर देन दो बिट्स, लाइक व्हाट आर द इंस्टीट्यूशंस जो कि वायबल ऑप्शंस हैं which they can and what they have to offer which JEE institution don't have to offer. Okay. So I think that JEE, the reason why students prepare for JEE is because of you get into government colleges which have lower fees as compared to private colleges. And the output is pretty much very good. They have good placement records, they have good brand value, they have good alumni structure, they have great facilities on campus, they have very big campuses, sports facilities अच्छी होती है. It's well funded by government. So now if you were to compare some other colleges which are as good as these colleges,
Obviously, BITS is a very good option. Apart from that, some other private options would be Manipal might be a good option. Then VIT Vellore is a good option. इसके अलावा it's possible that some Bangalore or some Mumbai colleges Hmm. might be a good option. Hmm. Like BJTI might be a good option. Through Comet K. Bangalore में through Comet के RVC might be a good option. Hmm. So I think ultimately what matters is कि um, like what I personally look for in a college is I want diversity. Like I want people coming from all types of areas. जैसे मेरे जो दोस्त हैं, right? I have friends from Mumbai, Bangalore. I also have friends from Jammu. I have like I know a junior from Manipur. And I have friends from Raipur, Bilaspur, Bhilai. There's this very small town on India-Pakistan border. I have a friend from there. So this you might not really get in like regional colleges, which are state okay colleges. So I always prefer going to national institutes like Manipal, like MIT Manipal, VIT Vellore, maybe RVC, Hmm. things like that. बाकी इसके अलावा आई डोंट नो आजकल बहुत सारे जेन ज़ी स्कूल्स आ रहे हैं लाइक थोड़े क्या बोलूँ मैं दे माइट बी स्टार्टअप्स बट दे आर लाइक Hmm. कॉलेज एज़ वेल लाइक एक स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से Hmm. आ रहा है देन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी फिर मास्टर्स यूनियन ऑल दीज़ जेन Hmm. ज़ी स्कूल्स I think they are also doing a good job. You can consider joining them because Hmm. you know ultimately what happens is that he they are trying to bring a change Hmm. which is not really like conventional. So Hmm. people consider it to be wrong. Hmm. But I think I've spoken to a couple of people from these institutes, like especially Polaris and Scalar, and I got a good review. Matlab, they are pretty happy with what they've faced so far. So I would personally like if I would not get into beds, I would go to Manipal Hmm. because I would say student quality is pretty good over there. Hmm. वहाँ पे बहुत साउथ इंडिया का डोमिनेंस नहीं है. Hmm. इट्स प्रीटी वेल बैलेंस्ड. तुम्हें नॉर्थ से भी लोग मिलेंगे बहुत सारे. एंड सेकेंडली लाइक इट्स क्लोज टू माय होम सो Hmm. मल्टीपल फैक्टर्स. Hmm. So like अदर बहुत सारे हैं. तो like what they have to offer is like diversity ज़्यादा हो जाती है and student diversity is what I heard like the main case for it. Like any other case for this private institution which you see like a great thing. See, the thing is, I would want to like, are you interested in startups? Yeah. Okay. See, as a person who's interested in startups, I love to talk to people from different backgrounds Hmm. so that I can get an insight about how life has been for them. So I come from Goa. Goa is not a city. Matlab, it's like I would say it's like a tier two area. Hmm. Yeah. So I would want to interact with all types of people. People who come from big cities, people who come from tier two areas, people who come from एकदम गाँव से जो आते हैं. This gives me a better perspective about how life is for different types of Indians. Hmm. And it helps me to, think about different types of solutions. Hmm. So that's one of the reasons why I like to talk. Plus, it's very good to have a strong network. Hmm. कल को लाइक जैसे मेरे एक जूनियर को परसों एक हेल्प चाहिए थी. He wanted to, collect something from a place in Ahmedabad. So he asked me if I know anyone, and I knew like 5 people from Ahmedabad. Hmm. It's crazy, right? Hmm. So that helps. What I was saying is that all these people are going to go to different places in the future, right? Going to go to your US, Europe, Singapore, and 5 years down the line, you'll be having such a dense network throughout the globe that even if you and plus these kids are smart, so they are going to end up in good managerial positions. Eventually, 5, 10 years down the line, if you need any type of help, some of them are going to be like maybe your first customer, or they might be your first, B2B business provider or whatever. They're going to help you a lot in general. So it's a very priceless thing and it's very overlooked, but it does help if you come from a good college. Hmm. Got it. And like you mentioned कि अब नए schools भी आ गए which are like entrepreneurs like colleges run as a startups. So
हुँ, कुछ लोगों के लिए वो बुरी भी चीज़ हो सकती है, कुछ हो नई भी चीज़ हो हुँ। सकती है, बट लाइक व्हाट इज़ योर लाइक इफ यू sum it up, like what do you think about those? See, the thing is, yeah, कि like, change is uncomfortable, right? Hmm. If something is changing, it's gonna be uncomfortable to look at. As a person from BITS, if I come to know that there is some other tech school जहाँ पे to get admission you don't need as great PCM as I had to study. It's gonna be a little painful for me कि like अरे मैंने इतनी मेहनत करके मैं इतने अच्छे कॉलेज में आया, फिर भी ये लोग मुझसे ज़्यादा अफोर्ड रहे हैं या फिर मुझसे ज़्यादा कर रहे हैं. It's gonna be a little disappointing to me, right? As a person, मेरा ईगो थोड़ा हर्ट हो जाएगा अगर मैं IIT बिट्स से हो तो NIT से हो. But you have to understand the fact that आज की डेट में यार skills are valued a lot. And if those schools are teaching you that material which is relevant to the real world application जो भी है मतलब होता है data science, AI/ML जो भी important है आज की डेट relevant, then obviously they're going to be better at you in real life, right? In the real world. Hmm. तुम शायद अच्छे हो in terms of your degree value, in terms of your social acceptance वाला चीज़, Hmm. social tag. बट अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ कि भाई तुम कितने फोर्ड हो, तुम्हारे में क्या स्किल है, तुम क्या इम्पैक्ट डाल सकते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. सो आई थिंक दैट लाइक आई स्पोक टू अ कपल ऑफ पीपल जो इन कॉलेजेस में आइदर दे आर एसोसिएटेड मतलब आइदर दे आर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट या फिर दे आर स्टडिंग देयर. And overall, the objective of these places is pretty clear that they only want to teach students tech that is important for the real world. Hmm. उनको अनवांटेड कोर्सेज जो इन कन्वेंशनल कॉलेज में होते हैं, Hmm. जैसे मेरे देयर इज इन द फर्स्ट ईयर यू हैव टू स्टडी केमिस्ट्री, यू हैव टू स्टडी मैथ, यू हैव टू स्टडी इलेक्ट्रिकल साइंस, ऑल दैट व्हिच माइट नॉट रियली बी नेसेसरी फॉर समवन जिसको मैकेनिकल पढ़नी है बस. जिसको मैकेनिकल पढ़नी है उसको मैकेनिकल ही पढ़ने दो पूरा. सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू एंड दे आर डूइंग इट फॉर सीएस बिकॉज़ सबसे हाई डिमांड में सीएस ही. Hmm. Hmm. Got it. So, तो आई थिंक hmm. फॉर अ टाइम दे विल हैव अ गुड रिस्पॉन्स मेरे हिसाब से. वंस दीस स्टूडेंट्स स्टार्ट रोलिंग आउट एंड स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल, वी विल ऑटोमेटिकली कम टू नो कि लाइक इन नए स्कूल्स का परफॉर्मेंस कैसा है एंड आर दे एक्चुअली गुड और नो. बट आई थिंक दैट दे आर डूइंग अ गुड जॉब. मतलब यार अल्टीमेटली स्टार्टअप्स उनका काम है टू चेंज, टू ब्रिंग अ चेंज, टू ब्रिंग अ डिफरेंस. Sometimes it takes time to accept the change. So we'll come to know कि like what difference these new age schools are gonna get. Sorry for the reoccurring question, but बिट्स की बात करते हैं तो फीस ऑलवेज कम्स इनटू द इक्वेशन कि लाइक Mm. फीस उसकी पर ईयर इंक्रीमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, एंड यू कैन शेयर लाइक व्हाट इज़ द डिटेल्स फॉर दैट. और लाइक Mm. इन द करेंट एज जहाँ पे अभी ऑटोमेशन एंड एआई जॉब अनसर्टेनिटी है मार्केट में, and especially for like the lower branches so called civil and all, like कितना प्रेशर हो जाता है स्टूडेंट पे, एंड लाइक किस क्या सबके लिए वर्थ इट है या सर्टेन मेंटालिटी ऑफ स्टूडेंट शुड ऑप्ट फॉर बिट्स? देखा मतलब I think that कि if you are a hard worker, हम्म. it's better to be at BITS than some other college. हम्म. That is not an IT old idea. अगर तुम्हें हार्ड वर्क करना है and if you are willing to work your ass off, हम्म. then it's better to be in a college like BITS than be somewhere else. Because अगर तुम same amount of hard work BITS में डालोगे, you would be at a much better position, right? अब talking about the fees, I personally think that the fees are expensive, and no matter how well off you are, paying 30 to 35 lakhs for a single or dual degree is very expensive. But the people overlook a lot of things that BITS provides. Like, for example, at Foodoo Club, we've done some collaborations with a lot of alumni from BITS. I would never get that opportunity if I was not from BITS. People don't value connections. People don't value network. They think that कि किसी को जानना एक बहुत बड़ी बात नहीं है. कोई भी तुम्हारी हेल्प कर देगा. रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता. पीपल ओनली हेल्प यू इफ यू आर रिलेटेड टू देम. आज की डेट में इफ आई वांट टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, आई कैन गेट द फाउंडर्स ऑफ 10 यूनिकॉर्न्स ऑन माय पॉडकास्ट.
Hmm. just because I'm from their college. Hmm. ये facility सबके पास नहीं होती. Hmm. It is very difficult. Hmm. Similarly, if I want to raise funds, there are at least, I think I personally know at least 7 to 8 VC firms that are founded by Bitsians. Hmm. ना? मुझे अगर funding चाहिए, it's just 2-3 calls away. Hmm. If I want to have an interview. Hmm. If I want to do a job, provided that I have a good portfolio, I've done a good amount of, I have some work ex. It's 2-3 calls away from me, like a good company का interview. है ना? ये चीज़ तुम्हें शायद बाकी कॉलेजेस में नहीं मिल सकती. Which is very priceless. Like we have a group called as BITS Startup Community. उसमें any message you put कि भाई मतलब I want to develop a tech software, उसके लिए मुझे ये चीज़ चाहिए. Hmm. Within 1 hour तुम्हें आंसर मिल जाएगा. Hmm. You will come to know. ये कॉन्टैक्ट है, ये मेरा दोस्त है. He will help you out. ये मेरे पहचान का इसका एक ही हैज़ एन एजेंसी इन दिल्ली, ये लो इसका नंबर. एक बार तो मेरे साथ ऐसा हो गया था कि लाइक आई वांटेड टू कॉन्टैक्ट द फाउंडर ऑफ अ कंपनी एंड आई आस्क्ड इन द ग्रुप कि डज़ एनीवन नो द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी. सम रैंडम पर्सन टैग्ड द गाय एंड ही इज़ लाइक ही इज़ द फाउंडर ऑफ द कंपनी. ही वाज़ इन द ग्रुप. Hmm. The founder of the company that I was searching for, I did not know if he was from BITS, Hmm. but he was in that group. Hmm. So things like that, this is priceless according to me. So type of service or any type of product, your initial customers are going to be Bitsians always. हमारे फैमिली या फिर Bitsians. Hmm. तुमने अगर टेस्ट सीरीज बनाई है, हमारे इनिशियल कस्टमर तो हमारे बैचमेट्स के छोटे भाई-बहन थे, है Hmm. ना? तो थिंग्स लाइक दैट, दैट कनेक्शन, दैट बॉन्डिंग यू डोंट रियली गेट इन अदर कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू मी. एंड अगर तुम पूरा वैल्यूएशन निकालो कि लेट्स से यू जॉइन बिट्स एज अ इन द मैकेनिकल ब्रांच, ठीक है? Hmm. और यू टेक अ डुअल डिग्री लाइक आई डिड इन बायो, व्हिच इज़ अ लोअर कट ऑफ. ऑल्दो मतलब फिजिक्स मिल रहा था मुझे, लेकिन मैंने बायो लिया बिकॉज़ मुझे नहीं करना था पीसीएम. एवरीथिंग इज़ अबाउट माइंडसेट. If you use all these resources that you know bits indirectly provides you, the amount you'll be making as a value and as, let's say, money will be much more than the amount you're paying to bits. Hmm. Like आज की डेट में I think I must have made uh, almost 2x the value of I'm paying to bits. Hmm. ठीक है? I'm in third year right now, Hmm. but people will not believe it because of multiple reasons. तो वही है कि like I already got job offers. I've already got a lot of uh, other things. They say, why did you approach me for a podcast? अच्छा. Okay. One of the reasons is going to be that I'm in bits, Hmm. and then one of the reasons is because, let's say, I'm running a startup, and plus I'm in bits. Bits Hmm. and startups get a lot of value. Hmm. This might not happen with a Manipal guy or girl. Hmm. ना? Hmm. It's not that cool. So ये सारे underlying benefits हैं that you get. And lastly, one more thing that I would like to add. ये शायद स्टूडेंट समझते नहीं है बिकॉज़ ऑफ अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. बट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिट्स का बहुत रिस्पेक्ट है. बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है. लाइक आई नो कंपनीज़ जो सिर्फ़ आईआईटीज़ और बिट्स से हायर करती है. Hmm. बस Hmm. एनआईटीज़ में नहीं जाती वो. Hmm. दे ओनली गो टू आइदर दे ओनली गो टू आईआईटीज़ और दे गो टू आईआईटीज़ एंड बिट्स. लाइक देयर आर सो मेनी स्टार्टअप्स दैट इज़ ग्रो. आई नो और एक कंपनी है, 1-2 हैं मतलब ऐसे-ऐसे नाम जो आई नो, नावी है. दे ओनली गो टू आईआईटीज़ एंड बिट्स. Hmm. यहीं से हायर करेंगे करना है तो. Hmm. And fun की बात ये है कि these companies are founded by Bitsians. Hmm. So it's a very underlying and low-key benefit that people don't look at. लोगों को क्या चाहिए ना, हम लोग X amount of fees दें, वो X amount of fees मुझे प्लेसमेंट के रूप में कितने साल में वापस रिकवर होंगी. And that's where most of them fail because छोटी सोच है. I think you should think big. भाई इस कॉलेज के इतने सारे फैसिलिटीज़ हैं. हमारे लाइक बहुत सारे प्रोफेसर्स दे गिव यू ग्रांट्स. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं बिट्स के अंदर. बिट्स बायोसिथ फाउंडेशन है, बिट्स बायरैक है, पाइड्स है. दे गिव यू फंडिंग इफ यू वांट टू स्टार्ट अप. Hmm. ये सारे कॉलेज में नहीं होता है. Hmm. तो ग्रांट्स मिलते हैं तुम्हें, क्या-क्या नहीं मिलता. थिंग्स लाइक दैट. अंडरलाइंग बेनिफिट्स है सारे कॉलेज. Hmm. बस एलुमनाई तो है ही भाई ऑब्वियसली. कितने सारे ग्रांट्स हैं, कितने सारे स्कॉलरशिप्स हैं. सो
overall, for me, it was worth it to join BITS. And I think it's worth it only if you make it worth it. अगर तुम ऐसा सोच के जॉइन कर रहे हो कि आई जॉइन, मैं नॉर्मल चीज़ें करूँगा, नॉर्मल सीजीपीए लाऊँगा एवरेज, एवरेज रहूँगा, तब ठीक है, तब भी तुम्हारे लाइक व्हेन द मार्केट्स इन गुड मार्केट सिनेरियो, मेबी अराउंड 12 to 15 lakhs per annum. Hmm. बट अगर तुम अबव एवरेज हो बिट्स में, इट्स ग्रेट, यू कैन डू वंडर्स. Hmm. So if anyone is watching this video and wants to join BITS, only join it if you're willing to work hard. Hmm. हार्ड वर्क हर जगह करना है भाई. मतलब तुम आईआईटी में जाओ तो इतना कॉम्पिटिशन होता है भाई. वहाँ पे सारे के सारे लोग हैव गुड कैलिबर. इमेजिन बीइंग अमॉन्गस्ट 3000 people with good caliber. You have to work your ass off to be good like them. Hmm. So join it if you want to work hard. Hmm. मैं स्पून फीड नहीं करेंगे यहाँ पे. Hmm. So it's a high risk, high reward kind of thing. If you're willing to put in the efforts, then join BITS. And like आपने अभी placement की बात करी, like obviously internship One and sec. I don't think it's high risk high reward. I think it's medium risk high reward. okay. बहुत हाई रिस्क नहीं है यार इसमें. मतलब इट्स 30 lakhs. इट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट बिकॉज if you are a BITS graduate in the next 10 years, Hmm. तुम्हारे लिए 30 lakhs will not be a big deal Hmm. considering you are a BITS graduate. Because I know people जो मतलब ऐसे Gen 2 IITs में पढ़े हैं, BITS में पढ़े हैं, 10 years ago they graduated. They are easily making 70-80 LPA आराम से. And if you're making 70-80 LPA at that stage, तुम्हारे लिए 30 lakhs is not a big amount. Considering कि तुम ये 5 year के 4 year के gap में दे रहे हो ना, every year it's 6 lakhs for education. So Got it. 10 years down the line, it's not a big amount for you. Got it. So medium It's risk, a medium. high reward. If you're willing to put in the effort, you have that mindset, then BITS is the way to go for you. Definitely. Yeah. And आपने placements की बात करी थी. Obviously, placement and internship opportunities is top notch. 12 to 15 lakh is the average package of BITS Goa. No. So the thing is कि like the data that I know personally, ठीक है. For mechanical, it was around 14. For electronics, it's around 17-18. Hmm. For CS Goa, I think it's around 24 के around होगा, 24-25. Av. पूरे campus का av is around 17-18. Hmm. Okay. 18. But the thing is कि current scenario में apply नहीं होता because अभी आजकल like market is very down. Hmm. So placements have gone very like low. Hmm. But on a good day, on a good market day, I think most of the seniors that I know that were hired during a good market time, वही है मतलब like 15 to 20 है उनका बीच आराम से. Hmm. जी. So Which is good, I think. currently But uncertainty है. This year, these year or two are anomalies. नहीं तो 15 to 20 lakh is the average. Got it. मतलब 15 तो मिल ही जाता है भाई. लाइक आईआईटी का इतना ही होगा शायद आसपास, इतना तो मिल ही जाता है. Got it. तो it's top अगर notch. तुम थोड़ा भी तुम अगर अबव एवरेज परफॉर्म कर रहे हो ना, इतना तो मिल जाता है मेरे हिसाब से. आई थिंक सो. So अगर तो तुम बिल्कुल ही मतलब अकेडमी में डाउन हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तब तो थोड़ा डिफिकल्ट है. बट अगर तुम डिसेंटली स्किल्ड भी हो एंड अगर तुम लाइक इवन इफ लाइक तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो इन समथिंग एंड ट्राइंग टू upskill yourself, like 15 is doable. 15 to 20 is like doable. So if you are putting the efforts, तो ROI like placement route से भी अच्छा हो जाता है काफी. हाँ. Okay. So now talking about the target audience of Podu Club, एक बच्चा है जिसने जेई दिया है. उसका जेई let's say whatever average गया है and उसकी preparation average है. Now he sees BITSAT as a valid option and he's willing to put in work, like hard work. So what is the action plan for him now? And how does Podu Club come into the picture? If you go to the Food Club website, we've never mentioned that we help you to get into BITS. Okay. We mentioned that let's get to your best potential. Hmm. So the entire idea of Food Club is to help you to get the maximum of your potential. ठीक है.
Now let's say कि you did decently in JEE. Let's say you did 70 percentile मान लो कितना कितना जंप कर रहे हो तुम? 70 तो लो हो जाएगा, लाइक से 80 to 90। ठीक है 80 to 90 है। अब 80 to 90 परसेंटाइल तुम्हारा अगर आया है तो मे बी इन सम स्टेट्स आई थिंक तुम्हें स्टेट कोटा के थ्रू एनआईटी में कोई लोअर ब्रांच मिल सकती है। हुँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या फिर एनआईटी गोवा थिंग्स लाइक दैट। मे बी इट्स पॉसिबल टू गेट अ लोअर ब्रांच लाइक हुँ, सिविल मैकेनिकल लाइक कट ऑफ वाइज लोअर ब्रांच। But if you've got if you've got a percentile in this range, it means that ki you don't have a very good grip over PCM. That you need to look out for other options apart from J. Now, it's better to look out for other options according to me because it's good to have backups. If you don't have backups, I know a girl, she had to take a drop. And taking a drop with no options is very bad. हुँ, तो थोड़ा अपना ईगो साइड में रखो। इट्स टाइम टू वेंचर आउट एंड टू अदर ऑप्शंस एंड बी थोड़ा प्रैक्टिकल। अब अदर ऑप्शंस क्या-क्या हो सकते हैं? एक तो इट कैन बी बिटसैट, हुँ, ठीक है? Because BITS is at par with IITs हुँ, and it's a very good college in my opinion. हुँ, इसके अलावा there are some other private colleges. There is MIT Manipal, there's VIT Vellore. Let's say you are from Maharashtra, then there are Mumbai ke colleges, there are Pune ke colleges. If you come from Delhi NCR, there is DTU, IIIT Delhi, there is NSIT, then IIIT Hyderabad भी है. If you come from Jaipur, there is LNM IIT. तो तुम्हारे एरिया वाइज जो भी है, things like that. If you come from Karnataka, Bangalore colleges, things like that. So that you can consider. अपने मेरे हिसाब से जेईई के अलावा बिटसैट देना चाहिए, 1-2 प्राइवेट एग्ज़ाम्स देने चाहिए उसके अलावा एंड अपने स्टेट का सीईटी देना चाहिए। तो जेईई, बिटसैट, 2 प्राइवेट एग्ज़ाम्स और स्टेट का सीईटी 5 एग्ज़ाम तुम्हें देने चाहिए मेरे हिसाब से मिनिमम। हुँ, बिकॉज़ स्टेट सीईटी में तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ और इन दोनों प्राइवेट में से कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हुँ, जेईई एंड बिटसैट थोड़ा है मतलब डिफ़िकल्ट। हुँ, तो तुम चुनो कि तुम्हारे प्रायोरिटीज़ को कौन से कॉलेजेस सूट कर रहे हैं। हुँ, अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो फॉर मी इट वाज़ लाइक कि आई वांटेड टू गो टू अ कॉलेज जिसमें अटेंडेंस थोड़ा लाइट हो, थोड़ा लीनिएंट हो। सो आईआईटीज़, एनआईटीज़ में तो 75-80% अटेंडेंस होता है। सो दैट वाज़ गोइंग टू बी थोड़ा बैड फॉर मी। बिट्स में 0 मतलब 0 तो नहीं बोलूँगा 10% है मान लो, लैब-वैब जाना पड़ता है हमें बहुत। आई थिंक मे बी थोड़े और कॉलेजेस इधर-उधर रैंडम कॉलेज में भी थोड़ा कम है, लीनिएंट होता है। सो दोज़ कॉलेजेस वर अ प्रायोरिटी फॉर मी बिकॉज़ मुझे स्टार्टअप में जाना था। आई रिक्वायर्ड टाइम। आई वांटेड टू मेक वीडियोज़, आई वांटेड टू डू सम अदर एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स, नॉट रियली इंटू एकेडमिक्स सो secondly, I wanted something close to my home. So I would preferably not take something that is away from Goa. Maybe Bangalore or Mumbai. मैं दिल्ली नहीं जाता, मैं हैदराबाद शायद जाता या नहीं जाता। फिर और एक फैक्टर क्या हो सकता है कि तुम्हारा क्या प्रेफ़रेंस है मतलब कोर्स में? डू यू रियली वांट इलेक्ट्रॉनिक्स और डू यू रियली वांट सीएस और आर यू जस्ट एमिंग फॉर अ गुड कॉलेज? सो तुम्हारी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। इन माय केस आई वाज़ नॉट ब्रांच स्पेसिफिक, आई वाज़ कॉलेज स्पेसिफिक। आई वांटेड टू गो टू अ गुड कॉलेज। तो जबकि मुझे वीआईटी में सीएस मिल रहा था, मैं फिर भी बिट्स में लोएस्ट ब्रांच कट ऑफ वाइज़ ले लिया। हुँ, बस हुँ, तो जेईई, बिटसैट, 1 या फिर 2 प्राइवेट एग्ज़ाम्स और स्टेट सीईटी देना चाहिए मेरे हिसाब हुँ, से। इन 5 में से 2 में तो हो ही जाएगा हुँ। कुछ ना कुछ। तो पहले अपनी चॉइसेस को एनालाइज़ कर लेना है कि यहाँ-यहाँ मेरे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, और फिर लाइक हाउ यू नीड टू डाइवर्सिफ़ाई योर लाइक प्रिपरेशन उसके बाद। या बिकॉज़ इट्स वेरी इंपोर्टेंट टू नो व्हाट यू वांट। हुँ, अल्टीमेटली अगर तुम वहाँ जाके रहोगे 6-7 साल, 6-7 साल नहीं, 4-5 साल हुँ, एंड तुम्हें अगर वहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही है जो तुम्हें चाहिए थी कॉलेज से, हुँ, तो पॉइंट नहीं है ना कोई भी। हुँ, तो इट्स ऑलवेज़ बेटर टू मतलब है थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, लेकिन इट्स वेरी इंपोर्टेंट टू बी लाइक इफ यू वांट टू बी सैटिस्फाइड एंड हैप्पी अबाउट योर हुँ, चॉइस। हुँ, अगर तुम किसी और का ओपिनियन सुन के अपना डिसीजन बनाओ तो शायद तुम वहाँ जाके खुश नहीं रहो। इट वन मोर थिंग मे बी थोड़े लोगों के लिए स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इट्स पॉसिबल कि किसी एक कॉलेज में स्पोर्ट्स को उतना भाव नहीं देते। जैसे मान लो ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, एग्ज़ाम्पल है। मुझे पता नहीं वहाँ पे सीन क्या है एग्ज़ैक्टली लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल से इट्स एकेडमिक्स ओरिएंटेड। अब अगर मुझे मान लो नेशनल लेवल स्विमिंग करनी है एंड मुझे वो एज़ अ प्रोफेशनल करियर देखता हूँ मैं।
मैं तो मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा ना, मतलब आई वुड नॉट वांट टू गो देयर। आई वुड वांट टू गो टू सम कॉलेज जैसा स्विमिंग पूल, वैसे थिंग्स लाइक दैट। Hmm. वेरी लेम एंड वेरी फनी टू अ लॉट ऑफ किड्स हू आर लाइक 17, 16, 17 years old, 17, 18 years old. But it matters, मतलब it makes a difference. Hmm. Ultimately it's about you. You have to be happy. Hmm. कोई तुम्हारे लिए और खुश नहीं रहेगा ना। Hmm. You have to be satisfied. You are doing all of this for yourself. Hmm. Got it. And what makes Fodu Club test series different from the other test series that are available in the market? Okay. So firstly, the test series is completely developed by a team of students at BITS. So considering the fact that we are studying at BITS, मतलब हमने BITSAT क्रैक किया है और सारे ब्रांच के लोग हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के भी लोग हैं, मैकेनिकल के भी लोग हैं, सीएस के भी लोग हैं, केमिकल के भी लोग हैं। डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं हमको एंड वी मोस्ट ऑफ देम मतलब 90% ऑफ देम आंसर्ड बिटसेट लास्ट ईयर। सो फ्रेश एकदम ओपिनियंस हैं, प्लस एक्सपीरियंस। सो दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग इज़ हम लोग टेस्ट सीरीज़ के साथ-साथ मेंटरशिप भी देते हैं। व्हाई इज़ मेंटरशिप इम्पोर्टेंट? बिकॉज़ आई वुड से कि आज की डेट में भी स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू एनालाइज़ देयर मॉक्स। दे डोंट नो हाउ टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ मॉक्स। वो लोग मॉक्स देते हैं, एक अपना स्कोर देखते हैं और अगले मॉक में चले जाते हैं। दे डोंट नो कि भाई मतलब इतने मिस्टेक्स हुए हैं, कैसे सुधारूँ उनको? इतने सारे सवाल नहीं बने, हाउ टू इम्प्रोवाइज़? मैं हर एक सवाल में 5-5 मिनट स्पेंड कर रही हूँ। आई डोंट नो हाउ टू रिड्यूस द टाइम। उसके लिए दैट्स वेयर मेंटरशिप हेल्प्स एंड इट टेल्स यू कि लाइक हाउ टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द रिसोर्स। लाइक वी हैव मेंटरशिप प्रोग्राम सो दैट वी कैन टेल यू हाउ टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द प्रोग्राम एंड हाउ टू मेक इट मोस्ट वर्थ इट। Lastly, we also have sessions with कॉलेज स्टूडेंट्स। मानो या ना मानो आज की डेट में इंडिया में कहीं न कहीं पे मोटिवेशन प्रॉब्लम है। एज़ वी नो दैट अटेंशन स्पैन लोगों का बहुत कम हो रहा है। It's becoming very difficult for people to focus for long hours. Well, it's important that you have some dose of motivation once in a while. And what better motivation than directly into students who are studying at your dream colleges? Hmm. So that helps the student to get a boost. मतलब ये सारे मतलब मैं insights बोल रहा हूँ जो मुझे बच्चों ने बताया। Hmm. और Got it. that these are the reasons why मतलब photo club does well. Got it. It's a club. Got it. And what I would has mix. the cutoff trend been for BITSAT? Like BITS बहुत सारे as you mentioned like mathematics and computing भी एक नई branch आ गई, so they are increasing the intake. तो cutoff trend क्या रहा है especially for the lower branches? क्या cutoff trend रहा है और कितने marks पे आपको एक BITSAT की सीट BITS की सीट इंश्योर हो जाती है? Okay, so 2-3 years ago the paper used to be out of 450 marks. Hmm. Okay. And I think around 60%, 70% स्कोर पे तुम्हें एंट्री मिल जाती थी Hmm. इसमें। बट सिंस द लास्ट 2 years it has been reduced to out of 390 marks, मतलब 130 questions. So the first year out of 390 में the cutoff went pretty low. Hmm. I would say 45%, 40% के अराउंड चला गया था Okay. आई थिंक। आई माइट बी थोड़ा रॉन्ग, थोड़ा ऊपर नीचे 5%। Last year was the second year of 390 marks and the cutoffs increased by almost 40 marks, 30, 40 Wow. marks Wow. at the lowest branch. And I think this year again थोड़ा इंक्रीज होगा मेरे हिसाब से। मे बी लास्ट ईयर जितना ना हो लेकिन एक 5-10 मार्क हो सकता है इंक्रीज। Hmm. सो इफ यू वांट टू नो अ सेफ स्कोर जस्ट टू एंटर बिट्स, आई थिंक 220, 225 is pretty safe Hmm. to get a seat at BITS. Hmm. And if you want to like get into branches like CS or electronics, 280 plus, 290 plus, safe, very safe. Yeah, 300 plus, 300 plus तो very safe. Hmm. तो but again मतलब वही है कि like अगर तुम्हें पिलानी CS में जाना है तो you need 340 plus, 330 plus. Hmm. अगर हैदराबाद CS में जाना है तो maybe it's 290, 300 plus. Hmm. So 2022 वाले कट ऑफ को नहीं देखना है, द कट ऑफ इज इंक्रीजिंग द 2023 का कट ऑफ को देख सकते हो, लोएस्ट मार्क्स 203 था शायद। बट बात ऐसी है ना कि ये सारे लास्ट राउंड के कट ऑफ्स है, लास्ट इटरेशन के कट ऑफ्स है।
If you want a safe score, you wouldn't want to get in the last Hmm. round. Hmm. सेफ स्कोर मीन्स कि तुम्हें फर्स्ट सेकंड इटरेशन में मिल जाएगा Hmm. एक सीट। Hmm. फर्स्ट सेकंड इटरेशन में सीट चाहिए तो 220 इज वेरी वेरी सेफ, Hmm. मिल जाएगा। Hmm. Got it. बट वही है कि लाइक लोअर लिमिट्स का हम लोग फिगर आउट नहीं कर सकते यार, बिकॉज दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि लाइक जब राउंड्स होंगे, काउंसलिंग चलेगी, उसी समय पे पता चलेगा कि लाइक एग्जैक्टली कितना है। 220 इज अराउंड 55-60% होगा आउट ऑफ 390, सेफ इनफ। सो जनरल ट्रेंड ये है कि वो 40-50% वाला जो लो आया था तब से कट ऑफ बढ़ रहा है। हाँ, ओके। वो लो एक्चुअली मल्टीपल रीजन थे यार, मतलब कोविड चल रहा था, लोगों की, बहुत सारे लोगों की सैलरीज अफेक्ट हो गई थी बहुत। एंड जब तुम्हारी सैलरीज अफेक्ट हो जाती हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू अफोर्ड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। हम्म। योर प्रायोरिटीज शिफ्ट टुवर्ड्स getting supplies for your family, food, healthcare, things like that. So when that happens, maybe people did not prefer coming to BITS as their हम्म। backup option or main option. Hmm. They had to go to other relatively cheaper options. No? Got it. That's why it reduced. सो सारे तीनों कैंपसेस के बीच टसल होते हैं कि विच इज़ द बेटर कैंपस। लाइक पिलानी को प्रेफरेंस मिलती है थोड़ी, बट लाइक यू आर फ्रॉम Hmm. गोवा, सो लाइक इफ़ यू हैड टू मेक अ केस फॉर बिट्स गोवा कि लाइक इधर ये चीज़ेस विच इफ मतलब इस वजह से आप गोवा को बाकी दोनों कैंपस की जगह प्रेफर कर सकते हो। भाई मतलब मेरा रीजन सिंपल था यार, मतलब मैं गोवा से हूँ, हम्म। आई डिड नॉट वांट टू गो अवे फ्रॉम हम्म। होम, सो आई टुक बिट्स। हम्म। अगर मैं कहीं और से होता आई वुड टेक पिलानी हम्म। पर्सनली, बट मुझे घर के पास रहना था, आई डिड नॉट वांट टू गो आउटसाइड माय स्टेट, हम्म। एंड इट वाज अ प्रायोरिटी फॉर मी टू स्टे बैक एट होम बिकॉज थोड़े मतलब थोड़े इश्यूज थे इधर उधर, एंड आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू गो आउटसाइड हम्म। गोवा। बाकी फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर किसी को कंसिडर करना है तीनों कैंपस में से, आई वुड से कि एक बार थोड़ा कंसिडर करो कि आर यू सेंसिटिव टू थिंग्स लाइक टेम्परेचर एंड हम्म। जो भी मतलब वेदर है उसको। पिलानी में काफ़ी एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है यार, मतलब व्हेन आई हैड गॉन देयर, मैं 2 दिन के लिए गया था, 3 दिन के लिए गया था। बहुत ठंड होती है, मतलब उस समय तो पीक ठंड भी नहीं थी। हम्म। आई वुड नॉट डील विद इट। इट हम्म। वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड इट इज़ वन ऑफ माय सेंसिटिव एरियाज़, मतलब मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ। आई गेट सिक, तो इसलिए हम्म। गोवा वाज़ बेनिफिशियल। बट इन जनरल अगर मैं बताऊँ, आई वुड से कि पिलानी इज़ बेटर देन गोवा एंड हैदराबाद। Hyderabad is also growing very, very fast in terms of placements, but I'm not sure कि in terms of on-campus culture and things being done on campus कितना बड़ा है। Like recently एक रिपोर्ट आई थी जीसॉक की कि कितने लोगों ने जीसॉक क्रैक किया है। गोवा कैंपस was थर्ड रैंक इन इंडिया ओके। और फोर्थ रैंक पे प्लान था। हम्म। हैदराबाद नहीं था, पता नहीं कहाँ, बट हाँ, हम्म। गोवा कैंपस को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो आई वुड से कि ओनली कम टू डोंट कम टू गोवा कैंपस थिंकिंग कि तुम्हें यहाँ पे गोवा के मजे मिलेंगे जो तुम लोग सोच रहे हो इतना। ठीक है, दैट हैपेंस मे बी वन्स इन अ मंथ, हम्म। और इफ योर अगर तुम्हारा वो प्रायोरिटी है तो मे बी थ्राइस इन अ मंथ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी लिविंग ऑन कैंपस। हम्म। You will be living in your hostel room, you will be living in the, you will be in the academic block जो भी है। हम्म। So not a lot of your life is going to be around those places that you want to, that you are dreaming of। हम्म। Secondly, गोवा का थोड़ा grading system is not as good as Hyderabad and Pilani। So I would say Hyderabad का grading system is very good। So let's say कि in Goa तुम बैठे हो and if you get 6 CGPA, in Hyderabad that would be around 7.3, 7.4 ओके। CGPA, same amount of efforts। हम्म। बट बिट्स का सिस्टम ऐसा है ना कि द पीएस सिस्टम दैट वी हैव, इंटर्नशिप सिस्टम, उसमें एक जनरल सीजीपीए देखते हैं। ऐसा नहीं देखते कि भाई वो में टफ ग्रेडिंग है तो इनको रिलैक्सेशन दे दिया। सो व्हेन यू आर कंपीटिंग विथ योर हैदराबाद एंड पिलानी peers, you lag behind। So although you have put the same amount of effort, you have a lower CGPA, and because BITS is not normalizing it, um, you will end up getting something that is not as good as they get। एंड इसके अलावा प्लेसमेंट्स वाइज आई थिंक पिलानी आगे है गोवा और हैदराबाद से। गोवा और हैदराबाद कहीं न कहीं पे ऊपर-नीचे काइंड ऑफ है। मे बी एक 1-2 का डिफरेंस होगा, 2 लाख का। लाइक पिलानी और गोवा के बीच में अराउंड डेढ़ 2 लाख का डिफरेंस होगा एवरेज में। गोवा और हैदराबाद के बीच में अराउंड 1 लाख का डिफरेंस होगा बिटवीन सिटीज़ के।
और इसके अलावा तो गोवा कैंपस में कंसिडर करने लायक ऐसी स्पेसिफिक कोई चीज़ तो नहीं है। प्रीटी गुड, मतलब तीनों बिट्स हुँ, प्रीटी गुड। हुँ, मैं तो बोलूँगा कि लाइक भाई मतलब अपनी लिस्ट बनाओ बेसिकली। तुम देखो तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? जैसे किसी को अगर स्विमिंग करनी है तो गोवा कैंपस मत आओ, यहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं है। हुँ, पिलानी में एक ओलंपिक्स है, स्विमिंग पूल है शायद, हैदराबाद में भी स्विमिंग पूल है। हुँ, अगर तुम्हें, जैसे मेरा एक दोस्त है अरविंद नाम है उसका, ही इज़ अ नेशनल लेवल स्विमर। हुँ, उसने खेलो इंडिया में भी कुछ उसको मेडल मिला था। अब यहाँ पे वो आ गया तो उसको स्विमिंग प्रैक्टिस करने ही मिली ही नहीं इतने साल से। सो इट वाज़ अ बैड थिंग फॉर हिम व्हेन ही वांटेड टू कंटिन्यू इट। सो ही हुँ, कुडन्ट डू इट। हुँ, तो थिंग्स लाइक दैट। बाकी आई वुड से कि अगर स्टार्टअप करना है तो आज की डेट में गोवा कैंपस में ज़्यादा स्टार्टअप्स है पिलानी से, ओके, ऑन कैंपस। हुँ. और The मेबी इन टर्म्स ऑफ YouTube फंडिंग। culture in Goa is something which has propped up. हुँ, हाँ, बात तो सही है, काफ़ी हाइप्ड अप था वो। बट अभी उतने रहे नहीं यार, मतलब आई थिंक मेरे जूनियर्स में आई हार्डली नो वन पर्सन हुँ, जो करता है यूट्यूब को। हुँ, तो पता नहीं क्या हो गया है, मतलब थोड़ा कल्चर चेंज हो गया है विद टाइम। हुँ, लेट्स सी इफ इट कम्स बैक। आई विल ट्राई टू एनकरेज सम स्टूडेंट्स जो अभी फर्स्ट ईयर में आएँगे। हुँ, इस साल यूट्यूब कल्चर था बहुत। इट स्टार्टेड इन 2020 आई थिंक। हरीश, क्यूरियस हरीश, फिर हुँ, पोट डैम, ईश शर्मा और मोक्ष बेंसला, लाइक रेड शर्ट गाय उसका नाम है। All these people had like 200, 300K subscribers. हुँ, And after they graduated, things started to थोड़ा calm down. हुँ, Because I don't know क्या रीज़न है उसके पीछे। बट थोड़ा कल्चर इन जनरल चेंज हो गया है। हुँ, कम यूट्यूबर्स हैं बिट्स गोवा के। हुँ, अभी भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस, हुँ, लेकिन बिट्स गोवा के हिस्ट्री को देख के कम है। हुँ. What led you to start YouTube? आप तो पहले भी बिट से पहले भी YouTube वीडियोस बनाते थे, है ना? हुँ, हाँ। फॉर मी सो आई हैव नेवर हैड माय ओन फ़ोन बिफोर 10th स्टैंडर्ड। हुँ, एंड मेरे ज़्यादा फ़ोटोज़, वीडियोज़ नहीं हैं पर्सनली ऑफ माय चाइल्डहुड एंड ऑफ माय अपब्रिंगिंग। एंड दैट यूज्ड टू लाइक हिट मी अ लॉट बिकॉज़ आई वांटेड टू सी हाउ लाइफ वाज़ व्हेन आई वाज़ लिटिल। हुँ, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई डिसाइडेड कि नहीं यार, मतलब नाउ अभी मैं थोड़ा लाइक मैच्योर हो गया हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। आई वुड वांट टू सी माय सेल्फ व्हेन आई वाज़ 20 इयर्स ओल्ड हुँ, एंड आई वुड वांट टू लिव दैट लाइफ अगेन। हुँ, सो इमेजिन अ 50 ईयर ओल्ड ध्रुव टीवी पे बैठा है हुँ, और मैं वो वाली वीडियो देख रहा हूँ जो मैंने 2021 में अपलोड की थी। आई वांट दैट फीलिंग। मुझे देखना है कि मैं हुँ, जब छोटा था कैसा था। दैट्स द रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़। एंड आई फेल्ट लाइक कॉलेज इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट इट हुँ, बिकॉज़ uh, it's a very romanticized life in general. हुँ, So I would want to remember those days. I would want to remember how life was. हुँ, And मान लो आगे जाके you come across people. You want to show them how life was हुँ, a couple years ago, couple decades ago. They can just see your video. हुँ. Got it. So So it started as documenting your experiences. I mean, even if you go to my YouTube channel, uh, my channel banner says that क्या कुछ लिखा है मुझे याद नहीं है। डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ कुछ तो लिखा है मैंने। डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ थ्रू वीडियोज़ ऐसा कुछ लिखा है। हुँ, सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। got it, got it. टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन डिग्रीज, अब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम्स प्रॉप अप हो गए हैं, लाइक काफ़ी सारे हुँ, मेजर इंस्टीट्यूट्स, बिट्स ऑल्सो हैज़ इट्स बीएससी कंप्यूटर साइंस हुँ, कोर्स. आपका क्या आउटलुक है उसकी हुँ। टुवर्ड्स, लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? So I think that कि if you just want a degree, like for the sake of having a degree, हुँ, then I think it's fine, मतलब if you go for these programs. हुँ, मतलब तुम्हें सिर्फ़ अगर एक चाहिए भाई दिखाने के लिए कि ध्रुव पायांग ने लिखा है बीएससी इन कंप्यूटर साइंस बिट्स पिलानी, तो सिर्फ़ दिखाने के लिए चाहिए, तो ठीक है। बट यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट इफ यू आर टेकिंग दीज़ ऑनलाइन डिग्रीज़। हुँ, लाइक अगर तुम उतना ही कुछ सिग्निफिकेंट कर रहे हो तो तुम्हें पहले तो डिग्री की ज़रूरत नहीं है। हुँ, और मान लो इफ यू आर डूइंग ऑनलाइन डिग्री बिकॉज़ तुम्हारा कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट है कहीं पे, हुँ, है ना? मान लो तुम्हारा यू आर रनिंग अ कंपनी, लेट्स से आई नो अ कपल ऑफ पीपल लाइक जैसे ज़ेप्टो, मान लो ज़ेप्टो के फाउंडर्स आदित्य पालेजा, दे वर रनिंग अ कंपनी एट अ स्केल। दैट टाइम उनके लिए फ़र्क ही नहीं पड़ता वो डिग्री हो ना हो, कुछ फर इट डज़न्ट मैटर, मेक सेंस एनीमोर।
बट थोड़े जेन्युइन केसेस भी होते हैं जहाँ पे यू हैव सम अदर कमिटमेंट्स ड्यू टू व्हिच यू कांट गो टू अ कैंपस। हुँ, मान लो कि लेट्स से योर हाउस इज़ डिपेंडेंट ऑन यू, लाइक हुँ, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे पे डिपेंडेंट है। हुँ, मे बी योर फादर इज़ सिक और मे बी योर पेरेंट्स आर नॉट डूइंग वेल हुँ, एंड यू हैव टू डेडिकेट योर टाइम टू मेक money for the family. हुँ, In that case, online degree can be हुँ, helpful. Maybe let's say if you are a working professional हुँ, or if you are, if you are having your own family, going to a campus and living there will be difficult for you. You have a kid, you have a wife. It is difficult for you to manage, and that time online degrees are good. बाकी इसके अलावा आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि जाओ कैंपस पे रहो, कैंपस के आसपास रहो। हुँ, Get that life. It's very important to हुँ, be independent, हुँ, and you learn to be independent. You learn to be, you learn to be more jugadu. हुँ, Uh, the more you live with yourself, and the more you like enter the real world. हुँ, So डिग्री से ज़्यादा कुछ होता नहीं है यार, मतलब ठीक है, इट्स गुड टू शो अपने तुम्हारे पेरेंट्स प्राउडली उसको फ्रेम करके रख देंगे हुँ, वॉल पे। हुँ, जो तुम्हारे शादी के रिश्ते आते हैं वो एकदम देखेंगे यार, कितनी अच्छी डिग्री है भाई, एकदम बढ़िया। बट वही है कि लाइक डिग्री विदाउट कॉलेज लाइफ का ऑफलाइन हुँ, एक्सपीरियंस एंड एक्चुअली लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल, इंटरेक्टिंग विद प्रोफेसर्स, interacting with great people is not very significant according to me. हुँ, बट हाँ, अगेन अगर तुम्हारी लिमिटेशंस है लाइफ में, हुँ, कुछ है प्रॉब्लम, जेन्युइन प्रॉब्लम है, हुँ, एंड यू कांट अफोर्ड टू लीव योर होम, हुँ, कांट अफोर्ड टू लीव दैट वर्क, देन प्लीज मतलब यू कैन कंसिडर ऑनलाइन डिग्रीज। कोई बुरा नहीं है। गॉट इट। सो यू हैव लाइक अ प्रॉपर क्लियर केस कि लाइक कॉलेज एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है और वो ऑनलाइन डिग्रीज नहीं रिप्लेस करती, तो लाइक इफ़ यू आर एबल टू प्लीज़ हैव दैट एक्सपीरियंस। आई मीन लाइक देखो कॉलेज लाइफ कैन बी अ बैड थिंग फॉर लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, बट it teaches you a lot of things. It teaches you how to deal with people. It teaches you how to deal with emotions. हुँ, It teaches you, in general, I would say time management. कि भाई ऑफलाइन कॉलेज के साथ साथ मेन कमिटमेंट के साथ साथ बाकी चीज़ें कैसे मेंटेन करो, मैनेज करो। हुँ, ऐसी चीज़ शायद तुम ऑनलाइन ना सीख पाओ, हुँ, और ऑनलाइन शायद तुम उस डिग्री को उतना सीरियसली भी ना लो। 4 साल बाद जब तुम्हें अपनी डिग्री मिलेगी तो यू विल तुम एक बार पॉज़ में चले जाओगे कि हाँ भाई, मैंने 4 साल इसके लिए इतनी मतलब मेहनत करी है फॉर दिस। मे बी तुम्हें वो लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑनलाइन डिग्री देख के शायद ना मिले। गॉट इट। एक और अब इट मेक्स सेंस, मतलब दिस इज़ कंप्लीटली मेरा ओपिनियन है ये। और हाँ, या एक और रिकरिंग क्वेश्चन, सॉरी, बट हमेशा एक बहुत ज़्यादा कंपैरिजन रहता है आईआईटी एंड बिट्स के बीच में। सो लेट्स नॉट गो इनटू के कौन सा बेटर है, बट आई थिंक बिट्स और आईआईटीज दोनों की एक कुछ यूनिक आइडेंटिटीज़ है विच दे हैव, द स्टूडेंट्स हैव। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि क्या आईआईटी ज़्यादा टेक्निकल है, बिट्सियन ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल है? What do you think about the हुँ। unique identities which both of these institutes have? सो आई थिंक दैट कि बिट्स में जनरली द पीपल हू कम टू बिट्स आर लाइक द परसेंटेज ऑफ पीपल हू कम फ्रॉम wealthier families Okay. and well-to-do families is higher at BITS than IITs. This enables the students here to take more risks Hmm. because they come from a decent family background. Hmm. So even if something goes wrong, the family is thoda supportive about it, and they have some type of corpus. Might not be the same case in IITs. So it's in general a little more entrepreneur. Hmm. But again, it's उतने टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते मेरे हिसाब से। Hmm. दे आर मोर प्रोडक्ट बेस्ड, मोर सर्विस बेस्ड टेक एंटरप्रेन्योर्स। कोई भी बिट्स स्टार्टअप देखो बहुत कम से टेक्निकल होंगे। Hmm. सारे बिट्स यूनिकॉर्न्स में से आई पर्सनली नो ओनली पोस्टमैन और जो बहुत टेक्निकल है। Hmm. उसके अलावा एवरीथिंग इज प्रोडक्ट बेस्ड, लाइक Hmm. ग्रो इज प्रोडक्ट बेस्ड, रेडबस इज Hmm. प्रोडक्ट बेस्ड, बिग बास्केट इज प्रोडक्ट बेस्ड। Hmm.
आईआईटी एंड स्टार्टअप्स तुम देखोगे बहुत सारे टेक्निकल वो भी होते हैं। ड्रोन स्टार्टअप्स हो गए, डीप टेक एआई, मशीनरी, दे आर मोर टेक्निकल, लाइक मोर पीसीएम इन्वॉल्व्ड, ये हो गया। और आई थिंक दैट बिट्स इन जनरल आर बेटर एट कम्युनिकेशन देन आईआईटियंस इन जनरल, ऑफ कोर्स, नॉट कंप्लीटली सेइंग कि हर एक बिट्स बेटर होता है। दिस इज़ प्रोबब्ली बिकॉज़ कि इंग्लिश जनरली अच्छे बोलते हैं यार, मतलब बिट्स के लोग, मैंने जो नोटिस किया है। मैंने पर्सनली बहुत सारे एनआईटियन से भी बात करी है। उनको वो लोग बात करने में थोड़ा डरते हैं कॉल पे, तो कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते। बिट्स में किसी भी लॉन्ड के पास जाओ, किसी भी आदमी और किसी भी पास जाओ, एकदम कॉन्फिडेंटली तुम्हारे साथ बात करेगा। हुँ, कुछ मतलब वो इतराएगा नहीं कुछ भी, मतलब वो कॉन्फिडेंटली अपना स्टेटमेंट बोलेगा। और इस सब के अलावा बिकॉज़ दे कम फ्रॉम uh, good, like decently well to do, well decently like uh, decent क्या बोलूँ मैं, लाइक इंडिया में अगर तुम स्टार्टअप लैंग्वेज में देखो ना, तो यार इंडिया इज स्प्लिट इन 2-3 पार्ट्स, इंडिया 1, इंडिया 2, इंडिया 3 ऐसा होता है। हुँ, जनरली बिट्स के लोग इंडिया 1 से आते हैं, अ वेरी बिग चंक ऑफ देम। सो इट्स अ गुड नेटवर्क टू बी इन, ठीक है? उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स आर एट सम गुड पोज़ीशन समवेयर, गुड नेटवर्क तुम्हें मिल जाते हैं कहीं न कहीं पे, थिंग्स लाइक दैट। ओवरऑल अगर तुम मुझे करने बोलो, आई वुड स्टिल से कि लाइक being in IIT Bombay is better than being in BITS Goa, obviously, because बहुत फंडिंग मिलती है यार आईआईटीज़ को, दैट रियली मतलब गिव्स देम दैट एज, जितनी उतनी उतनी फंडिंग बिट्स को नहीं मिलती है। बट अ, एक बहुत नीश कॉलेज है बिट्स, बहुत कम, जैसे सिलेक्टिव लोगों को बिट्स अच्छा लगता है, हुँ, जो अटेंडेंस लाइट लेना है, जिनको स्पेसिफिकली ऐसे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जिनको क्या बोलूँ मैं, मतलब थोड़ा लाइक कार्ड लाइट लेना है, जिनको थोड़ी पढ़ाई करनी है। थोड़ा स्ट्रेन, बहुत कम बिट्सियंस करते हैं यूपीएससी और गेट वगैरह, हुँ, बिकॉज़ इट्स एन एक्सपेंसिव कॉलेज, पीपल जनरली वांट टू गेट प्लेस्ड आफ्टर द हुँ, डिग्री। आईआईटीज़ में ऐसा नहीं होता, व्हाट आई हैव हर्ड इज़ कि बहुत सारे लोग गेट करते हैं, बहुत सारे हुँ, लोग आईआईटी जैम करते हैं। हुँ, देयर इज़ एन एंटायर सेक्शन ऑफ पीपल जो हुँ, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हुँ, एंड बिट्स में खाली मतलब कैट, जीआरई, जीमैट ये सब होता है। हुँ, यूपीएससी और यूपीएससी, आईआईटी जैम और गेट थोड़ा कम प्रोपोर्शन में होता है। हुँ, तो हाँ, प्रीटी मच आई थिंक इतना ही है। इसके अलावा तो कंपेयर नहीं करना चाहूँगा मैं। आईआईटीज़ और बिट्स की अपनी-अपनी बात है। ओवरऑल आईआईटीज़ आर ग्रेट कॉलेजेस। थोड़ा रिज़र्वेशन वाला पार्ट आई डोंट पर्सनली डोंट लाइक। हुँ, अच्छा हाँ, दिस कैन बी अ गुड थिंग, बिट्स में कोई रिज़र्वेशन हुँ, नहीं है। पूरा मेरिट बेस्ड एडमिशन है, तो सारे कैलिबर वाले लोग आते हैं। मतलब ऐसा कोई ये ढोंगी नहीं होता कि लाइक किसी ने कम मार्क्स स्कोर किए थे इसलिए उसका एडमिशन हो गया जस्ट बिकॉज़ ही इज़ फ्रॉम अ स्पेसिफिक कास्ट। हुँ, तो आईआईटीज़ में होता है। तो ओवरऑल क्वालिटी इज़ मेंटेन्ड। हुँ, And if you talk to someone, if you, let's say if you randomly pick a person in bits, he or she, they are of good caliber, they have good potential, which might not be true in the case of IITs and IITs. हुँ। तो एक लेवल पे वो वाला भी जो है वो ग्रॉस जनरलाइजेशन ट्रू है कि आईआईटियंस थोड़े स्टूडियस हो सकते हैं, बिट्सियन थोड़े एंटरप्रेन्योरियल हो सकते हैं। स्टूडियस दोनों लोग हैं भाई, स्टूडियस सब लोग हैं। देखो, यहाँ तक पहुँचने में तुम्हें स्टूडियस बनना ही पड़ता है। हुँ, If you're not studious, you firstly don't make it to IIT or हुँ, BITS. हुँ, एंड स्टूडियस वाला जो तुम्हारे खून में होता है ना, स्टूडियस वाला कीड़ा, वो इन कॉलेजेस में जाने के बाद भी मतलब कुछ तो होते ही हैं लोग, नो मैटर व्हाट। हुँ, गॉट इट। बट बिट्स में ये होता है कि लाइक दे हैव दैट फाइनेंशियल कुशन, क्योंकि वो हुँ। अच्छे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होता है, तो वो स्टार्ट एंटरप्रेन्योरियल ज़्यादा हो सकता है। एंड लाइक और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें हैं। I would, सब लोग नहीं होते हैं, मतलब आई वुड से लाइक 60% ऑफ पीपल इन बिट्स आर कमिंग फ्रॉम गुड बैकग्राउंड्स, लाइक गुड फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स। बट हुँ, बाकी के 40% लोग तो सेम ही होते हैं, मतलब आईआईटी बिट्स। हुँ, हुँ। तो और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल लाइक चीज़ें होती हैं विच लाइक फैसिलिटेट्स द एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इन द बिट्स। हुँ, ठीक है। और लेट्स से कि इफ यू वांट टू स्टार्ट अप, लेट्स से फर्स्टली तो इट डिपेंड्स कि इन व्हिच फील्ड यू वांट टू स्टार्ट अप।
जैसे बिट्स में बायोलॉजी, बायोटेक इन सारे स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। सो बहुत सारे ग्रांट्स हैं, बहुत सारे लाइक फैसिलिटीज़ हैं। यू कैन यूज़ कॉलेज की फैसिलिटीज़ फॉर योर प्रोजेक्ट। सेम अप्लाइज टू मैकेनिकल ऑल्सो, मैकेनिकल एंड सीएस बेस्ड ऑल्सो। सो बिट्स का जो एक इंक्यूबेटर है, स्टार्टअप इंक्यूबेटर, इट्स कॉल्ड पाइड्स, PIEDS, इट्स इन पिलानी। सो दे गिव यू फंडिंग एंड incubation इफ यू वांट टू रेज अराउंड। सो प्री सीड मिलता है, तुम्हें सीड भी मिलता है। इसके अलावा गोवा कैंपस में बायोसिथी ऐसा कुछ तो बोलते हैं उसको, वैसे एक नाम नाम से एक फाउंडेशन है। कोई भी बायो की अगर स्टार्टअप कर रहा है, इन जनरल या फिर स्टार्टअप कर रहा है, उसको सपोर्ट करते हैं हम। फिर हमारे कैंपस के जस्ट गेट पे देयर इज समथिंग कॉल्ड बिट्स बायरैक। दीज दे जनरली सपोर्ट बायोटेक स्टार्टअप्स, Hmm. फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, वर्क स्पेस प्रोवाइड करते हैं, थिंग्स लाइक दैट। उसके अलावा भी पीपल कनेक्ट यू टू रेलेवेंट पीपल। तो हमारे जो डीन्स हैं, एसोसिएट डीन्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, Hmm. दे दे नो आवर एलुमनाई ना, हू आर नाउ इन वीसी फर्म्स, हू आर नाउ इन सम अदर मे बी सम अदर फंड या फिर जहाँ पे भी। तो दे कनेक्ट यू विद देम, रेलेवेंट पीपल हू कैन हेल्प यू। तो जनरली अगर तुम नोटिस करोगे तो बिट्सियन कंपनीज रेट्स फंडिंग्स फ्रॉम बिट्सियन स्टार्टेड वीसीज। Hmm. ऐसा कोई बायस नहीं है, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आवर कॉलेज सीनियर्स प्रेफर टू इन्वेस्ट इन देयर जूनियर कंपनीज। Hmm. Got it. ऐसे। सो सेम चीज़ आईआईटीज़ में भी होती है। आई वुड से आईआईटीज़ में बेटर लेवल पे होती है बिकॉज़ गवर्नमेंट उनको फंड करता है फॉर ऑल दीज़ थिंग्स। बिट्स में ऑल दीज़ फंड्स कम फ्रॉम एलुमनाई सपोर्ट एंड थिंग्स लाइक फीस सपोज़। तो आईआईटी में ऑब्वियसली लाइक ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से। बट अवेयरनेस कम है, ज़्यादा लोग परस्यू नहीं करते उसको शायद। सिर्फ आईआईटी आई वुड से सिर्फ मे बी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर में ही करते होंगे। इसके अलावा उतना अवेयरनेस नहीं होगा मेरे हिसाब से। Hmm. बिट्स में भी लाइक पिलानी गोवा में ही है बहुत अवेयरनेस, हैदराबाद में अब तक उतना शायद नहीं है। Hmm. Hmm. Got it. Let's talk about AI and tech. क्योंकि the reason I started this channel was for that, but फिर audience ज़्यादातर student college finding students की ज़्यादा आ गई, तो like that's I'm supposed to make that kind of content more. So what do you think, when are we reaching AGI? व्हेन आर वी रीचिंग? AGI. एज है क्या है? Which is the mission of OpenAI, like artificial general intelligence, generally क्या? intelligent. अच्छा, अच्छा एज ही है। अच्छा मैं सुना नॉट एबल टू। ओके, Huh. एज ही है। See, the thing is कि the rate at which things are happening, Hmm. I would say that अगले डेकेड में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी हमारी लाइफ में। Hmm. द वे वी आर डीलिंग विद थिंग्स राइट नाउ, Hmm. लॉट ऑफ इट वुड चेंज। Hmm. जैसे अभी भी लाइक आई डोंट थिंक बहुत एकेडमिक लोड होता है बच्चों पे बिकॉज़ ऑफ चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सारे टूल्स तुम्हारे पास हैं तो थिंग्स हैपन एट अ क्विकर रेट। Billboard है, Grammarly है, दीज़ आर हेवीली मतलब इन्वेस्टिंग इन R&D। Hmm. और आई थिंक इन द नेक्स्ट डेकेड बहुत सारी चेंजेस आ जाएँगी, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होंगी। Hmm. मेबी कंप्लीटली लाइक जो तुम बोल रहे हो एजीआई वो शायद अचीव ना हो एक डेकेड Hmm. में। बट 2050 तक ईज़िली हो सकता है। Hmm. लाइक इन इन 2-3 डेकेड्स में भी पॉसिबल है। Hmm. 2030 तक शायद ना हो, 2040, 2050 तक हो सकता है Hmm. कंप्लीटली। But I'm personally a little scared about it. I wouldn't want it to happen. Hmm. It's good to have an artificial entity helping you make life easy, helping make your life easier. But that is also making us more lazy, and that is also making us Hmm. more uh, like ending up having less physical activities bad, Hmm. ending up having less activity by your brain is bad. Your brain should work more. You should Hmm. be doing more physical activity to be healthy. Hmm. So थोड़ा स्कैरी है वो। बट एआई अगर तुम अपने एग्जिस्टिंग वर्क सिस्टम्स को एनहांस करने में यूज़ करो तो अच्छी बात है। Hmm. बट इतना एनहांस भी मत करो उसको कि लाइक तुम अपने थ्रू कुछ सोच ही नहीं रहे हो। Hmm. इट विल इट विल ऐसे आई पर्सनली रियलाइज दैट कि
that I know, I don't have to really like write essays or anything. It has somewhere led to a creative problem in my head. Hmm. I'm not very creative when it comes to writing because I'm like कोई और लिख लेगा. अब मान लो सिमिलरली कोई और एडिटिंग करके देता है तुम्हारे लिए एआई, यू विल बिकम लेस एंड लेस क्रिएटिव. तुम टाइम के साथ इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड तुम उधर की उधर ही अटक जाओगे Hmm. बिकॉज सम एआई इज एडिटिंग फॉर यू और Hmm. सम एआई इज डूइंग सम वर्क फॉर यू. Hmm. थोड़ा स्कैरी है. एंड अगर मतलब लोग उसको जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ज़्यादा दे माइट Hmm. एंड अप लाइक लूजिंग आउट ऑन देमसेल्व्स. Hmm. सो या मतलब प्रॉस्पेक्ट स्केरी है, सबको लगता है. एंड लाइक यू थिंक कि तो 2050 तक प्रोबेबल है कि उस लेवल का हाँ. सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम बन सकता है. एंड देन व्हाट वुड हैपन टू जॉब्स और यूबीआई? क्या लगता है आपको उसका क्या सीन होगा? भाई बहुत ही से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये. व्हाट आई थिंक इज दैट कि आई थिंक दैट कि जो लोग अपनी फील्ड के टॉप 1% में होते हैं ना उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. सिंपल. हम्म. पीपल हु आर जैसे मान लो कोई भी जॉब उठा लो लाइक लेट्स से कॉपी राइटिंग. हम्म. I think the people who are there at top 1% of copywriting, हम्म. I don't think they'll face a lot of problems हम्म. because ultimately, clients want humans to do their work, and clients would want highly skilled humans to do their work. हम्म. So if you are in the top 1% of any category, हम्म. I don't think it'll affect. हम्म. But what happens to the If you are 99%? 99% might, what they can do is they can use these new tools and new services that are being developed to get in the top 1%, to get closer to the top 1%. हम्म. बिकॉज़ कहीं न कहीं पे अल्टीमेटली यार देखो बात ऐसी है कि रिप्लेसमेंट्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय टेक, है ना? हम्म. राइटर के लिए रिप्लेसमेंट इज़ हियर, आर्टिस्ट के लिए रिप्लेसमेंट इज़ हियर ऑन द वे. तो अगर तुम मैकेनिकल में भी अगर देखो बहुत सारी लेट्स से कार किसी को अगर कार बनानी है, सारी मशीन्स अवेलेबल है मार्केट में अगर तुम्हें कार बनानी हो तो. वोक्सवैगन थोड़ी मतलब एक-एक बंदा बैठ के थोड़ी टायर फिक्स कर रहा है उसका, नहीं कर रहा है ना? सब मशीन्स हैं. तो I would say कि if you are not using AI to enhance your work right now, you will get lagged. So the more you use AI to help in your work, the better it is. But eventually, कहीं ना कहीं पे AI is going to disrupt most of the workers. हम्म. कहीं ना कहीं से. हम्म. Considering you are working on a laptop, not like physical labor work, उसमें तो नहीं कर पाएगा. हम्म. जैसे for example अभी uh, mm, any work that involves field work might not be replaceable by AI because you have to be in the present for that. You have to be in the zone for that. तुमको जाना पड़ता है वहाँ पे वर्क स्पेस में. वो डिफिकल्ट है. बट थिंग्स दैट रिक्वायर पैटर्न रिकॉग्निशन एंड थिंग्स दैट जस्ट रिक्वायर कि भाई मतलब ये हिस्ट्री रही है इसको देख के फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है. हम्म. उस सब में थिंग्स लाइक दैट जहाँ पे हम्म. डेटा बहुत अवेलेबल है हम्म. वो एआई मतलब सरपास कर लेगा मोस्टली. आई डोंट थिंक डेटा साइंटिस्ट भी मतलब थोड़े टाइम में शायद लाइट हो सकते हैं. हम्म. Got हाँ, it. मतलब इन सब चीज़ों में टाइम आई डोंट थिंक हम अपने को वरी करना चाहिए हमारे जनरेशन में एटलीस्ट. Hmm. वी आर फाइन. A decade or two is left. ठीक है मतलब अ डेकेड और 2 में वी विल बी एट अ प्रीटी सेफ स्पॉट इन लाइफ. तुम्हारी एज कितनी है? 19. 19, 20. आई विल टर्न 21 नेक्स्ट इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स मतलब अक्टूबर. Hmm. सो 2 डेकेड्स मान लेते हैं विल बी 40 इयर्स ओल्ड. बाय द टाइम यू आर 40 मतलब यू हैव डन लाइक लॉट ऑफ मोस्ट ऑफ द हाइपर एक्टिव थिंग्स इन योर लाइफ. Hmm. 40-50 की एज में. उसके बाद जनरली यू एंड अप यू नो यू एंड अप डूइंग थिंग्स दैट आर नॉट वेरी हेवी वेट. थोड़ा तुम लाइट काम करते हो फिर Hmm. आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज, Hmm. है ना? तुम उतना लोड नहीं लेते. आई डोंट थिंक सो मतलब जनरली पीपल नहीं लेते. Hmm. तो तुम्हारा मोस्ट हाइपर एक्टिव काम जो होगा वो फर्स्ट 40 इयर्स 50 इयर्स ऑफ योर लाइफ में. Hmm. तो उसके बाद तो तुम्हें ऐसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब तुम उस और आई थिंक ऑल्सो वन मोर थिंग. अगर तुम 40 इयर्स तक काम कर भी रहे हो राइट 50 इयर्स तक
तुम बहुत स्किल्ड हो जाओगे यार, मतलब यू विल ऑलरेडी बी हैविंग 40 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, 30 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस जो भी है। और तुम्हारे पास 30 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है, व्हाई डू यू नीड टू बी वरीड अबाउट सम रैंडम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमिंग एंड टेकिंग योर जॉब? हम्म यू विल बी प्रेफर्ड एनी डे बाय एक सेंसिबल इंसान हमेशा तुम्हें प्रेफर करेगा। हम्म एक सेंसिबल कंपनी, एक फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी हमेशा एक इतने एक्सपीरियंस पर्सन को प्रेफर करेगी ओवर हायरिंग एआई। हम्म हम्म So you don't have to worry. People who will be born after 5 years, 10 years will have to worry. got it. And I'm also noticing light count should be a thing when interviewing a Bitsian. Light count, हाँ. That should be a counter should be there. And Hmm. आपके फ्यूचर गोल्स अब क्या होने वाले? आर यू लाइक फुल फोकस्ड ऑन फोडू क्लब और लाइक और भी कुछ प्रोजेक्ट्स आपके दिमाग में है? देखो यार, मतलब उर्दू क्लब में डेफिनेटली आई वुड वांट टू गो डीपर इनटू इट, बिकॉज जब तुम कुछ स्टार्ट नहीं करते हो ना, तब तुम्हें उसके बारे में पता नहीं होता कि like, इसका स्कोप कितना है, एग्जैक्टली रिस्पॉन्स क्या है, व्हाट इज द फीडबैक अबाउट इट एंड ऑल दैट। बट व्हेन यू ट्राई आउट समथिंग, यू गेट फीडबैक एंड यू कम टू नो कि इसका स्कोप कितना है। सो हम लोगों ने पिछले दो एक डेढ़ साल में जो काम करा है, उसके बेसिस पे हमको बहुत सारे इनसाइट्स मिले हैं, एंड वी वुड वांट टू वर्क ऑन दैट एंड बिल्ड मोर थिंग्स। सो डेफिनेटली वोडू क्लब को परस्यू करना है मुझे। आई वुड वांट टू स्केल इट बिगर, मेक इट मच बिगर देन व्हाट इट इज टुडे। इसके अलावा आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ कपल ऑफ अदर बिजनेस प्लान्स भी हैं, बिजनेस आइडियाज भी हैं, जो एक्सिक्यूट करेंगे जब वोडू क्लब थोड़ा मतलब एक लेवल पे हम्म पहुंच जाएगा। हम्म And apart from that, maybe just I would want to make more videos. I'll try to make more videos. हम्म नहीं मिलता बहुत, but I try. So अभी के लिए तो हार्डकोर फोकस तो स्टार्टअप ही है, फोटो क्लब हम्म वही करना है। वेकेशन चल रहा है मेरा, बट आई एम स्टिल वर्किंग। हम्म तो एक स्केल पर उसको जब रीच कर जाएंगे फोडू क्लब को कि अब डेलीगेट कर सकते हैं, तो मे बी देन यूल फोकस ऑन अदर थिंग्स, बट अभी फोडू क्लब इज द फोकस. See, I think that कि the more you go deeper into something, the more scope you see. हम्म So after a point, I don't think there's no looking back. मतलब honestly, you can do more and more and more things. Like photo club is a generic name. कल को जाके अगर मैं एक फिटनेस क्लब खोल दूँ, मान लो फिटनेस एक जिम हम्म खोल दूँ विद द नेम फूड क्लब, पॉसिबल। हम्म आई कैन ओपन आई कैन ओपन अ क्लोज्ड प्रीमियम कम्युनिटी फॉर एआई एंथुसियास्ट्स और हम्म फूड क्लब हम्म स्टॉपिंग मी। हम्म सो इमेजिन द स्केल ऑफ इट, मतलब लाइक इट कैन बी एनीथिंग। पीपल थिंक इट्स अ बिट सैट के लिए टेस्ट सीरीज, The बट मैंने जब network इसको नाम दिया, continues after BITSAT too. मैंने जब उसको नाम दिया था, मैंने ये सोच के दिया था कि इस दुनिया में कोई भी अगर कम्युनिटी बनानी हो, वैसा नाम होना चाहिए। Hmm. Hmm. Food club can be the name of any community. Hmm. Any community. It can any freaking thing. Hmm. अगर मैं इसको बिटसैट क्लब नाम लेता तो इट वुड बी लिमिटेड टू बिटसैट। Hmm. कल को जाके जेई में एक्सपांड करना तो नहीं कर पाते। Hmm. बट बिकॉज़ फूड क्लब नाम है, आई कैन लिटरली डू एनीथिंग विद द नेम। Hmm. जिम खोल दो, लिटरली एक मान लो कुकिंग क्लब, नेम फूड क्लब, इट कैन बी पॉसिबल। तो अ ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर कैन बी कॉल्ड फूड क्लब। got it. तो काफी एक जनरल स्टार्टअप है वो, एंड उसकी पॉसिबिलिटीज अभी बहुत है. सो लाइक यू आर लाइक कि इसको लॉन्ग टर्म में फोकस में रखना है आपको. हाँ यार, मतलब व्हाट आई डू इज़ आई प्रीटी मच ट्राई टू थिंक कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या-क्या है ना? हम्म What are the things we can venture into? What are the possibilities out there? What are the possible ways of making it bigger? हम्म And the name does give me a lot of flexibility. हम्म Like I don't have to restrict myself to some niche or some market. got it. एंड व्हाट आर लाइक यूट्यूब पे आप क्या कंटेंट बनाने वाले हो व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग? यूट्यूब पे आई थिंक दैट कि कॉलेज में जो मोस्टली वीडियोज़ लाइक बनाने लायक होते हैं, व्लॉग्स, फिर डे इन माय लाइफ वीडियोज़, फिर थिंग्स लाइक क्या बोलते हैं उसको, हॉस्टल टूर, वो सब सारे वीडियोज़। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी मेड देम, हम्म सो इट गिव्स मी लेस स्कोप ऑफ
बोलते हैं उसको, लेस स्कोप ऑफ कॉलेज वीडियोस. But maybe because I'm a senior in college now, I have that थोड़ा बहुत experience that firsties, secondies want and need. Maybe I would want to make videos about that, Hmm. share my experience. साइड बाय साइड मैं फोटो क्लब के जर्नी को भी डॉक्यूमेंट कर रहा Hmm. हूँ ऑन माई चैनल. अब तक शायद 3 वीडियो चल चुके हैं, राइट? हाँ, Hmm. तो उसको भी मैं कंटिन्यू करूँगा. Hmm. आई ट्राई टू डॉक्यूमेंट मोर अबाउट दैट. Hmm. एंड अल्टीमेटली लाइक राइट नाउ आई डोंट डू यूट्यूब फॉर व्यूज और फॉर सब्सक्राइबर्स. Hmm. आई जस्ट डू इट बिकॉज़ आई थिंक इट्स फन. Hmm. एंड अगर मेरा मन नहीं होता तो मैं वीडियो नहीं डालता. Hmm. तो लाइक आई डोंट रियली, मेरे को तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइक भाई लोग क्या बोलेंगे, ये क्या वो, मैं समझता है आई जस्ट पुट वीडियोज़ व्हेन आई एम इन द मूड फॉर इट. So it's अभी more hobby based हो गया है? हॉबी बेस्ड ही है वो हमेशा. Hmm. इट हैज़ ऑलवेज़ बीन हॉबी बेस्ड. Hmm. Hmm. So But I think that, but the fact that I'm able to build a company from my hobby hmm. makes it a very big deal. Love. Imagine making a video on your YouTube channel and getting your initial customers. Hmm. That that's why I respect it a lot. Hmm. So something that is my hobby is helping me get traction for my company. Hmm. So I would like to use that opportunity to make it bigger. Hmm. So the secondary benefits of having a YouTube channel and a community can be really helpful in starting a startup and so on. तो YouTube की बात बताता हूँ मैं. YouTube का ऐसा है ना कि लाइक इट एक्ट्स लाइक अ फनल. Hmm. So people watch you on YouTube, and some of them who want to be like more associated with you, they are looking out for ways to talk to you, to interact with you. How will they interact with you? Maybe they'll DM you on Instagram. Maybe if you made a Telegram group, they'll join it. That's how they get one step closer to you. Hmm. So what we do is we generally, I would want to get people one step closer to me. Hmm. Hmm. So YouTube पे it's like I keep it surface level information. मतलब जो surface level पे होना चाहिए, जितना information बताना चाहिए, उतना ही बताता हूँ मैं. Hmm. I don't share a lot there Hmm. because I think it's like YouTube पे there is some type of distance from the audience. Hmm. You can't show exact एकदम ओरिजिनल लाइफ यूट्यूब पे, Hmm. बिकॉज़ वो उतना नहीं होता है, लाइक उतना दिखा नहीं पाते लोग. Hmm. इट बिकम्स थोड़ा फैंटासाइज्ड. Hmm. बट इट डज़ हेल्प अ लॉट. यूट्यूब हेल्प्स अ लॉट. Hmm. So it's a good general advice कि जिनको startup भी build करना है कि like YouTube can act like a funnel to your community. YouTube का revenue उसके AdSense से बहुत minimal होता है. You made a video about it. Personal question आपका like if you can share like revenue per 1000 views कितना होता होगा अभी? मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है यार. मतलब मैंने कभी चेक भी नहीं किया अपना रेवेन्यू. बट आई थिंक लाइक वेट लेट मी थिंक अबाउट इट. आरपीएम पूछ रहे हो ना तुम, रेवेन्यू पर मिल? हाँ, per ये 1000 तो नहीं पता मुझे. views या million views. आई डोंट थिंक इट विल बी मोर देन लाइक 50 रुपीस, 60 रुपीस. Okay, wow. But इट्स वेरी लेस. it is good. 50-60 rupees is good. Like what I can tell you is that it took me, I think, around 6 months to make my first $100. Hmm. Hmm. 7 months, Hmm. which is a lot. 7 months to make 8,000 rupees is a lot of time. Hmm. Considering the fact that कि मैं मुझे उस 7 months में कितने मतलब कितने लाख व्यूज आए होंगे क्या पता. Hmm. सो ये यूट्यूब का एक दिक्कत है कि लाइक इनिशियली इट्स ज़ीरो, लाइक 4000 वॉच आवर्स तक कुछ नहीं मिलता है, तो लाइक दैट कैन बी डिमोटिवेटिंग. बट नाउ एज यू आर मेंशनिंग 50-60 रुपीज़ पर 1000 इज़ गुड इनफ. लेट मी सी ना, मतलब देखते हैं, सामने ही तो है. 50-60 देखो मतलब per 1000, यूट्यूब then for a million you will make 50-60K. So that is okay. दैट इज ओके, बट इट आल्सो डिपेंड्स कि भाई मतलब कितने ऐड जा रहे तुम्हारे वीडियो Hmm. पे. मेरे आधे वीडियोस आर नॉट मोनेटाइज्ड Hmm. बिकॉज़ आई यूज्ड जैसे अगर तुम देखो यहाँ पे तो लाइक आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, बट लाइक Hmm. रेड Yeah. रेड रेड रेड, Why is that the एक ही case? ग्रीन है बिकॉज़ आई यूज कॉपीराइटेड म्यूजिक. अच्छा. ओके. आई थिंक इट्स फन. मतलब एकदम बिल्कुल ही रेवेन्यू से मतलब ही नहीं है, मतलब फिर तो. भाई मतलब
अपना लाइक आई एम रनिंग अ Hmm. YouTube प्राइवेट लिमिटेड, is तो मेरे लिए not क्या है, मतलब 3 से महीने का क्या करूँगा मैं इसका मैं? Hmm. इससे अच्छा मैं अच्छा म्यूज़िक यूज़ करके वीडियो को अच्छा एक्सपीरियंस दूँ Hmm. लोगों को। Hmm. But okay, 300 महीने से मतलब but this was higher than my expectation कि like मेरे को लगता था इंडिया का बहुत लो होगा like 10-20 rupees. So this is शायद हो गया, मुझे पता नहीं, लाइक आई नेवर चेक ऑल दिस, लाइक मेरे को सब लाइट लगता है, hmm. Okay. मतलब क्या करूँगा मैं रेवेन्यू, यूट्यूब का रेवेन्यू इनसिग्निफिकेंट, मतलब आई कंसीडर ज़ीरो ओनली। ये देख के खुशी होती है मुझे कि लाइक हो रहा है कुछ, अच्छी बात। Hmm. लाइक आई डोंट रियली केयर कि मतलब हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, लास्ट 28 डेज़ में, बिकॉज़ अभी थोड़ा ओके, मैं तुम्हें एवरेज बताता हूँ। तो ऑन एवरेज इन अ मंथ इट्स अराउंड 300 एंड 320 रुपीज़ का अराउंड है। Per 1,000 views. नहीं, इन अ मंथ। अच्छा. हाँ. मतलब कुछ तो है, मतलब कहीं न कहीं जो आई डोंट नो हाउ टू से आरपीएम। आरपीएम शायद, अच्छा हाँ, है ये कुछ तो ल आरपीएम इधर दिखता तो नहीं है यार, मतलब फ़ोन पे नहीं दिखा रहा है शायद। फ़ोन पे नहीं दिखा रहा है आरपीएम। Hmm. बट हाँ, मतलब ऑन एन एवरेज इट्स अराउंड 300 रुपीज़ पर मंथ। Hmm. Which is nothing for you. इट्स नथिंग फॉर एनीवन। Yeah. But you तो आई मीन कंसिडर यूज़ म्यूज़िक तो इस वजह से वो थोड़ा-सा डेटा अब 1000 हो जाएगा। हुँ. नहीं, ₹1000 से क्या करूँगा, मतलब ₹1000 के लिए मैंने आई मेड 8 वीडियोज़, एवरी वीडियो टूक मी 4 आवर्स। हुँ. आई स्पेंट 50 आवर्स टू मेक ₹1000। हुँ. तो बस उसका बेनिफिट लाइक द कम्युनिटी के लिए है कि लाइक द आईबॉल्स दैट फोडू क्लब गेट्स बेसिकली. हाँ, इससे अच्छा मैं तो भाई ड्राइवर बन जाता मैं एक दिन में ₹1000 कमा गाड़ी चला के। Got it. So like do you advise students to like build a following on YouTube because it's good for startup पर revenue के लिए मत जाना उसके. देखो यार, मतलब तुम्हारा पर्पस क्लियर होना चाहिए। अब जैसे थोड़े लोग इस वीडियो को जो देख रहे होंगे, वो बोलेंगे कि भाई क्या बात कर रहा है, इसके लिए ₹300 कुछ नहीं है, ₹1000 कुछ नहीं है, ऐसे क्या बात कर रही है? दैट इज़ बिकॉज़ लाइक मेरे लिए मनी इज़ नॉट अ प्रायोरिटी थ्रू यूट्यूब। हुँ. I started YouTube because it was fun. हुँ. I wanted to make videos. हुँ. I thought it was just I thought it was like when I look at my first year के videos, I feel very proud हुँ. and that emotion is priceless to me. उस मैं मेरे लिए ये 1000 ₹1500 कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक मैं उस इमोशन के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो वही है कि लाइक अगर तुम्हें पैसों से मतलब है, अगर वो तुम्हारी प्रायोरिटी है टू डू यूट्यूब, देन यू हैव टू डील इट विद अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू। हुँ. I never deal with I never dealt with YouTube as a business. I dealt with it considering it as a hobby. हुँ. तो मैं वो मनी एस्पेक्ट नहीं लाता हूँ बीच में। हुँ. जैसे कल मैं बिटसैट रिएक्शन वीडियो शूट करने गया था हुँ. एंड इट कॉस्टेड मी ₹500 प्लस हमने कुछ खाया था ₹1000। बट आई एम फाइन विद इट बिकॉज़ हुँ. मेरे लिए वो एक्सपीरियंस वाज़ मोर इम्पोर्टेंट। हुँ. Those videos but get many eyeballs. गेट अ लॉट ऑफ आईबॉल्स, दैट्स अ प्लस पॉइंट। Yeah. So I think at this point we can end this. It was an honor to have you on and like बहुत बढ़िया कॉन्वर्सेशन हुई फॉर पीपल. ज़्यादातर लोगों ने चेकआउट कर रखा होगा ध्रुव भाई आंगले. ही हैज़ अ यूट्यूब चैनल. चेकआउट फोडो क्लब. एंड ऑल्सो अभी यहाँ तक वीडियो देख लिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो. एंड आई सी यू लाइक. प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मतलब आई अंडरस्टैंड द पेन एंड एफर्ट्स दैट go behind any YouTube channel initial phase में। प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड try to support any creator or any person that is near you and trying to do something different। बहुत कम लोग होते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू शौर्य एंड इसको भी जल्दी हो सके तो 10,000 सब्सक्राइबर्स पे लेके जाओ। Hey, your 10,000 is very soon. So लेट्स सी, yeah. डिपेंड्स थोड़ा